Hello students, today I would like to make you understand about doubly linked list. Okay, so now notice over this. अगर linked list की बात की जाए and if I try to insert any elements, then this will insert या this will reserve memory location in our computer system as the node. Okay, जैसे if I try to insert 5, 4, 6, 10, if I try to print like 4 elements, okay, so definitely in this case this will create 4 node 1, 2, 3, and 4. In the singly linked list case, here the node divided into two parts. Singly linked list case में हमारा जो node है वो divided होता है two part में, जहाँ first one होता है info part and the second one next part. Okay, next part hold the address for the next node. Suppose the address for this node is 104 105 128 152 like this. As you know that अगर लिंक लिस्ट की बात की जाए तो यहाँ हर एक एलिमेंट रैंडमली एड्रेस को स्टोर करता है. ओके, लाइक 5 4 6 10 लाइक दिस. एरे में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट अपना एक कंसेक्यूटिव ऑर्डर में एड्रेस को स्टोर किए हुए है, लेकिन लिंक लिस्ट के केस में रैंडमली एड्रेस स्टोर करता है. ओके, सो हियर द फर्स्ट पार्ट स्टोर डेटा एंड द सेकंड पार्ट स्टोर द एड्रेस फॉर द नेक्स्ट नोड. जैसे ये हमारा एड्रेस स्टोर करेगा किसका, नेक्स्ट नोड का, लाइक 105 ये एड्रेस स्टोर किए हुए 108 फॉर द नेक्स्ट नोड, ये एड्रेस स्टोर किए हुए 152 फॉर द नेक्स्ट नोड, and the last node will store null ptr. Okay, now in this case this will mandatory, here we will have to create the head node. हम लोगों को यहाँ पर हेड नोड क्रिएट करना होगा जो कि पॉइंटर टाइप का होगा. इसका काम क्या है, दिस विल पॉइंट द फर्स्ट नोड, ये फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा एंड दिस विल आल्सो स्टोर द एड्रेस फॉर द फर्स्ट नोड, ये हमारे फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड किए रहेगा और फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा. नाउ नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट लाइक दिस. इट मींस यहाँ आप ध्यान देते हो सिंगली लिंक लिस्ट के केस में तो हमारा जो ट्रैवर्सिंग है वो फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग है, केवल फॉरवर्ड. नाउ if I try to print the same element after using a doubly linked list case, so simple, this will also create node in our system like 1 2 3 and 4 node. Okay, and here each node divided into 3 section. Okay, each node divided into 3 section. As you know that here the node address will be reserved randomly for each node. हर एक नोड के लिए जो एड्रेस होगा वो हमारा रैंडमली रिजर्व होगा, जैसे 5 5 एंड 102 लाइक दिस. ओके, एनी एड्रेस कहीं पर भी ये हमारा जो एलिमेंट है ये इसको स्टोर कर सकता है. अब यहाँ क्या है, ये जो बीच वाला तीन भाग में तीन सेक्शन में डिवाइड है, तो बीच का जो है पार्ट वो कंटेन करता है इन्फो. ठीक है, सो इन्फो क्या कंटेन किए हुए है, डेटा लाइक 5 4 6 and 10. Okay, now this part contain the next address for the next node. This part hold the address for the next node. ये part address hold किए हुए है next node का. So this is store 128. This next part जो कि हमारा एक पॉइंटर टाइप का है, this hold the address for the next node 155 and this hold the address for the next node. Okay, एंड एट द लास्ट नोड हमारा एड्रेस क्या होल्ड करेगा, नल, जीरो. ओके, क्यों, क्योंकि ये हमारा सबसे लास्ट नोड है. ओके, नाउ नाउ दिस सेक्शन विल स्टोर द एड्रेस फॉर द प्रीवियस नोड. ये सेक्शन जो है वो हमारा एड्रेस स्टोर करेगा प्रीवियस नोड का, लाइक 155. ये एड्रेस स्टोर किए हुए हैं प्रीवियस नोड का. दिस सेक्शन होल्ड द एड्रेस फॉर द previous node, so 128, and this section hold the address for your this previous node like 104. ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर किए हुए हैं एंड दिस स्टोर द एड्रेस फॉर द नेक्स्ट नोड, जो कि हमारा यहाँ पॉइंटर की जैसा काम कर रहा है. दिस विल आल्सो वर्क एज द पॉइंटर, this also work as the pointer and this also work as the pointer. Okay, now here in this case definitely here we will have to create head, हम लोगों को एक हेड क्रिएट करना पड़ेगा.
जो कि पॉइंटर टाइप का होगा एंड दिस विल पॉइंट द फर्स्ट नोड, ये हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ओके, नाउ नोटिस ओवर दिस नोड। ओके, ये हमारा क्या नोड इंसर्ट करेगा, so, इसके प्रीवियस में हमारे पास कोई भी नोड नहीं है, सो हियर द फर्स्ट नोड आल्सो स्टोर द एड्रेस नल फॉर द प्रीवियस। ओके, ये जो है हमारा नल एड्रेस को स्टोर करेगा फॉर द previous, okay, because this is the first node, so इसके previous node में कोई भी एड्रेस नहीं है, so this point null address। okay, now this is the head pointer and head pointer point the address for the first node। head pointer हमारे first node के एड्रेस होल्ड किए रहेगा, so definitely in this case this store 104 like this। okay, so traversing, now notice over the traversing, so in the doubly linked list case, here the forward traversing will happen, forward traversing होगा, and here we can also traverse backward। ओके, हम एलिमेंट्स को फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग से भी फाइंड कर रहे हैं या प्रिंट करवा रहे हैं, एंड इफ आई ट्राई टू डिलीट या इंसर्ट एनी एलिमेंट एट द एंड पोजीशन, सो इन दिस केस हियर वी कैन आल्सो ट्रैवर्स एट द एंड पोजीशन। ओके, नाउ अब अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो क्रिएशन हम कैसे करते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट में एक स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया जो कि यूजर डिफाइन है, या हमने एक नोड क्रिएट किया जो कि स्ट्रक्ट डेटा टाइप का है। ओके, नाउ inside this in the singly linked list case, here this will mandatory to create int data because first section हमारा क्या स्टोर करता है, डेटा, एंड एक हम पॉइंटर का डिक्लेरेशन करते हैं जो कि नोड टाइप का होता है नेक्स्ट। ओके, सिंपल, फॉर द फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग के लिए हमने क्या यूज किया, नेक्स्ट और पॉइंटर का यूज किया। लेकिन इन द डबली लिंक लिस्ट केस, डबली लिंक लिस्ट केस में हम लोगों को एक और पॉइंटर का डिक्लेरेशन करना होगा जो कि प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा। ओके, सो दिस इज अ सिंपल overview about doubly linked list. If you try to learn about this in detail, then you may visit my channel. Thank you for watching this.